If I have to go back to my childhood, the first kind of addiction that I think that I came across was porn. It is not something that I really wanted to get into. You know, over a period of time, मेरा जो सर्कल था एक तरह से फ्रेंड्स का सर्कल होता है वो इस तरह बन गया, थोड़े रिस्की फ्रेंड्स होते हैं and those who want to try something new and novel in life. That was my point when I came across porn, sex, what exactly it is. नमस्ते गाइस, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका पहले एपिसोड में ऑन आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट बीइंग मेन। और आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस के बारे में एंड मेरे साथ हैं यश, वर्धन, स्वामी। What's up guys, how are you? And आज बात करेंगे एडिक्शंस की, one of my favorite topics when it comes to men, because generally इसकी बात नहीं करी जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। बट लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू वी डिफाइन एडिक्शन, बिकॉज ये ऐसा वर्ड है जो हर जगह थ्रो अराउंड कर रहे हैं लोग फॉर लिटरली एनीथिंग। फूड नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उसको एडिक्शन कहने लग जाते हैं। सो एडिक्शन को अगर साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए या एज पर द DSM मैनुअल्स डिफाइन करें, addiction is something, it is repeated and chronic use of a substance which becomes compulsive in nature. इसको मैं अभी हिंदी में भी समझाऊंगा। which becomes compulsive in nature despite knowing the consequences. कि सबसे पहली तो addiction की ये है कि repetitive है और चलता रहता है, लॉन्ग टर्म चल रहा है। whosoever is stuck in the addiction is knows की consequences हैं इसके, but वो कैन नॉट हैज लॉस्ट कंट्रोल एंड दैट इज व्हाट एडिक्शन इज। कि बेसिकली क्रॉनिक यूज है, लॉन्ग टर्म है, रेपिटेटिव है और आपको पता है कि आपकी लाइफ में सब हो रही है उसकी वजह से, स्टिल यू आर यूजिंग इट। राइट, बिल्कुल सही बोला। एंड आई फील एडिक्शन जो वर्ड है ना, सबसे पहले तो एडिक्शन से पहले आता है एक वर्ड नशा। नशा एक्चुअली आप पहले मेरे को अभी ना ये बताओ कि आप नशा को डिफाइन कैसे करते हो? सी, नशा इज समथिंग विच whatever it is which gives you pleasure. नशा कुछ भी हो सकता है, दारू, स्मोकिंग, एक इंसान भी आपका नशा बन सकता है। फूड जैसे हमने बात की, कंपल्सिवनेस होती है, फूड भी नशा बन सकता है। एंड सांस, ब्रीदिंग, वो भी नशा बन सकता है। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, पर्टिकुलर स्पोर्ट आप खेलते हो, वो भी आपके लिए नशा बन सकता है। फोन्स जो हम यूज़ करते हैं ऑन अ डे टू डे लेवल, वो भी नशा बन सकता है। सो एडिक्शन से पहले नशा इज द वर्ड दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट, बिकॉज छोटे होते से नशा जब बात होती देन वी यूज टू कम अक्रॉस अल्कोहल, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, कि हमें इसके नशा होता है या ड्रग्स होते हैं इसका नशा होता है। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसके भी नशे हो सकते हैं। आप किसी इंसान के भी नशा हो सकता है आपको। अब दिस इज अगेन अ पर्सनल ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस विद माई सेल्फ एंड द क्लाइंट्स। अब लाइफ है, लाइफ में कुछ अमाउंट ऑफ नशा यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ प्लेजर इज गुड, राइट, आउट ऑफ ए मोनोटोनस डे, आउट ऑफ मोनोटोनस लाइफ। बट जब वही नशा आपकी आदत बन जाए एंड जब आपकी लत बन जाए एंड आप उसके बिना अपनी लाइफ को एक नॉर्मल ढंग से जी ना सकें, दैट बिकम्स एन एडिक्शन फॉर मी। दैट इज the exact definition of addiction that I tell myself, to the people that I meet, and that is how I see this word addiction. एडिक्शन जैसे आपने मेंशन किया, मैं यहाँ पे मैं एक और चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि एडिक्शन और डिपेंडेंस दोनों अलग चीज़ें होती हैं। डिपेंडेंस इज कि आपको फिजिकल डिपेंडेंस है, addiction is you don't want to stop it or you can't stop it even if you want to. So dependence बहुत बार क्या होता है कि although addiction and dependence go hand in hand, thin line, very thin line, but dependence है थोड़ा physiological जब differences आ जाते हैं। Also in the end जैसे आपने mention किया pleasure, सारी addictions are defined by pleasure centers, right? Pleasure centers and stress, so इसलिए addiction is mainly a psychological problem, right? Psychological and even psychosocial problem, right? Because वो social obviously environment भी matter करता है, right? But mainly brain से linked है, because आपके brain के pleasure centers को hijack कर लेता है in a way, जो भी जिस भी चीज़ से आप addicted हो। और एक और भी चीज़ बताऊंगा, जैसे अभिनव ने अभी just mention किया कि it's not just about consuming something, it can be some activity also. Compulsion जिस जहाँ भी है जो, and that is affecting some areas of your life that can cause issues. Yes, I think बिल्कुल सही बोला आपने। Dependence और addiction, I think it's a very thin line. Dependence और addiction में I think major difference ये होगा कि addiction is something, an activity or a substance or a person repetitively which can harm you, physically, mentally, emotionally. I think dependence वो चीज़ है जो आपको शायद harm ना कर सके, आप dependent हो जाते हो उस चीज़ के, बाद addiction can actually harm you. So I think this is one of the differences that we are talking. So यश, आज हम किस चीज़ के बारे में exactly, like addictions के बारे में क्या क्या चीज़ें cover करने वाले हैं, so that our audience has an idea कि आज हम किस tangent पे निकलेंगे।
एडिक्शन की जो मेन चीज है, मैंने देखा कि दोज हु गेट एडिक्टेड डोंट इवन रियलाइज कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, राइट? सो वील स्टार्ट विद स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, परफेक्ट, फिर वील डेल्व डीप इनटू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, परफेक्ट, उसके बाद कि अगर इफ यू आर स्टक इन इट, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट, राइट, एंड आई यू नो एक पार्ट में मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि बेसिकली मैस्कुलिनिटी का क्या रोल है एडिक्शन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फादर्स, राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड जनरली इस चीज की बात नहीं होती है, राइट, एंड स्टेजेस ऑफ एक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट, बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है स्टेजेस ऑफ एक्शन। इनिशिएशन, पहली बार ट्राई किया, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, थोड़ी बार ट्राई किया, फिर रेगुलर यूजेज के बाद आती है रिस्की यूजेज। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो रेगुलर यूजर है उसको नहीं पता लगता कि रिस्की यूजेज पे कब पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आगे डिपेंडेंस और फिर आगे एडिक्शन। ये बताओ अभिनव, कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी रेगुलर यूज या इवन इनिशिएशन, थोड़ा सा मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताओ प्लीज। See, if I have to go back to my childhood, the first kind of addiction that I think that I came across was porn. Yes. Okay. And I remember I used to be a very nice child, a valedictorian, coming from a very good family. Both my parents are teachers in education field. So it is not something that I really wanted to get into. But, over a period of time, मेरा जो सर्कल था, एक तरह से फ्रेंड्स का सर्कल होता है, वो इस तरह बन गया। आई रिमेंबर आई वाज इन 5th-6th स्टैंडर्ड तक मेरा फ्रेंड्स का सर्कल बड़ा अच्छा होता था, लाइक दे वर ऑल क्यूटी पाइज एंड स्टफ। बट देन आई स्टार्टेड एक बच्चे को, एक चाइल्ड को ना टेंशन की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट अटेंशन एट होम एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट अटेंशन एट स्कूल। प्रॉब्ली टीचर्स के लिए मैं बहुत अच्छा था, बट इन योर सोशल सर्कल यू वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। सो देन वो शिफ्ट हो गया एंड देन माई सर्कल बिकेम अ लिटिल डिफरेंट। I started becoming more inclined towards जो थोड़े risky friends होते हैं, and those who want to try something new and novel in life. And that was my point when I came across porn, sex, what exactly it is. उसके पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था what exactly it was. It was around 13-14. Puberty hit me really late. I think it's same for everybody. Same most. But I still felt कि जो मेरे आसपास के थे उनको शायद puberty ज़्यादा जल्दी हिट कर गई या मुझे लेट हिट की. I still don't know. If you look into today's time, bro, it's much younger. It's like 7, 8, 9 years. I agree to that. I think मेरे लिए भी 13-14 years था जब ऐसा सा phase आया. Yeah. And उस time I had a bunch of friends who used to talk about this porn and stuff, and I never got interested because I was a very focused child, focused on my studies, extracurricular activities. I was a sports person. मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी. But then I started craving for attention. Yes. Right? And that is usually when you try to fit in and see what all is going on. So as एक दोस्त ने बोला, you are looking up to certain figures in your group कि this is like an alpha figure. So there was this person and he said, oh तू porn देखता है? मैं कहा porn क्या होता है? I don't know. कहता तो कोई बात नहीं, तो संडे को नहीं वीकेंड पे तू घर पे जब छुट्टी होगी, मॉम डैड नहीं होंगे, तू बताना, मैं आएगा. So he came over and he showed me what exactly it was. For me it was a very weird experience. I was always like pukish. I'm like क्या है? This doesn't make sense. But then over a period of time, getting in touch with those friends again and again and repeating that same behavior again and again, somehow I started getting that kind of attention, or you can say I was feeling that I'm able to fit in that group. I had a common topic to talk about: sensuality, sex, porn, whatever you want to say. So then I got inclined towards it. And छोटे जब होते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है जिसके लिए पेरेंट्स मना करते हैं ना, वो चीज़ करने सबसे ज़्यादा मन करता है. Reactance theory. So yeah, reactance theory. So my father was very conservative and he never used to let me watch any kind of kissing scene also on HBO and stuff. So I was always curious. As a kid, I was always curious. So then I saw that I'm fitting in. So I repeated that behavior again and again. You start talking about it, then you start attracting it more and more and more and more and more. And then eventually at some point of time I did realize कि I am addicted to it, because in the morning, in the nights, all I can think of is getting that one clip or filling my we used to have the pen drives at that point of time. We used to have floppies and pen drives. तो मुझे था कि हाँ ये कहीं से मिलना चाहिए, because that became a common point of connection with that group, and you could have a common टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर सकते थे. सो दैट इज माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हैविंग एन एडिक्शन. व्हाट अबाउट यू? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. पहले मैं आपके पॉइंट को थोड़ा वो करना चाहता हूँ, बिकॉज अटेंशन एंड प्लेजर, दीज टू थिंग्स.
again, for most people, addiction start with like peer pressure, right? आपके केस में भी in a way peer pressure, because in the end peer pressure क्या है कि I want to fit in, right? वो fit in करने के चक्कर में ये चीज़ें start हो जाती हैं. एक और चीज़ mention करना चाहूँगा यहाँ पे, lack of control does not mean you are addicted, right? Lack of control, and for a lot of people, for example, for you, if work is your priority, a lot of times say I'm addicted to work. No, it's not. If you have some priority, that's totally fine. So having a clear difference between both of these can help. जैसे आपने mention किया, जैसे pleasure centers की बात करी कि in the end, why are these substances so nice? Why is maybe porn so nice? Why do people get attracted to it? That is because जो हमारी baseline happiness levels है, उसको वो बढ़ा देता है. Happiness और pleasure centers को बढ़ा देता है. Simple example देता हूँ. For example, आपका dopamine अभी अगर 1x है, तो certain drugs take this up to 2.5x, 10x. अगर आप 10x पे आ गए हो, तो आपको 1x वाली लाइफ या 1x वाली चीजें पसंद नहीं आएंगी. Same goes for porn, because porn क्या है, in a way it's pursual towards a woman, right? That is how our brain perceives it. अगर pursual चल रहा है, that's something which is natural to us. But issue कहाँ आ जाता है कि doing that in real life, pursuing a woman in real life, becoming competent so that women are attracted to you, versus you sitting on a computer, which is very easy, which can be done all the time, all day long. That is what creates issues. Dopamine, बहुत बार लोग सोचते हैं dopamine खराब है. Dopamine बहुत सही है. But if you are getting it from wrong sources, be it porn, be it substances, be it your alcohol, that is what creates issues. True that. It's just like an hedonic machine, okay? So everything is good. Whatever natural thing that is being produced in the body, it is good. But again, you jerk off too much, yes, you will be done with it. You'll be like, I don't want this. I want something else. You'll have too much of sex. You're like, I don't want this. I don't enjoy this. I need something more wilder. I need something more exciting for this. तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है, that dopamine level is set. But again, as a kid or in a normal state of life, you are usually getting that dopamine, that baseline levels from just day-to-day life activities. You play sports, you get dopamine level. You hit gym, you get dopamine. But then when you have that experience which gives you that unrealistic, that super 10x, superhuman experience, 10x. ये क्या था भाई? Exactly. What the hell was this? Yes. Like, what was I doing? Yes. And then you're like, am I boring? Like, am I really missing out on something? Like, this is not making sense. I used to think that I'm happy. Yes. But how can this thing exist? This is real happiness. ये तो मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है. And then like you're more, you want to try it. You're a little curious about it and you want to have more of it. You want to try a bit more. I think that is one of the traps that one gets into when we call it addiction. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने, जैसे you want to have more of it, because in the end क्या होता है, आपने जो फर्स्ट टाइम चीज यूज करी वो सेम है, आप सेम अमाउंट में रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते. उससे ज़्यादा चाहिए. So हर बार है क्वांटिटीज कीप ऑन गोइंग अप, फिर उधर से रेगुलर यूजेज से रिस्की यूजेज पे कब चले जाते हैं. आपके लिए क्वेश्चन है ब्रो, कभी आपका कोई ऐसा फेज आया कि यार जब आपने सोचा, जब आप एक्चुअली रेगुलर यूज से रिस्की यूजेज पे पहुंच गए, व्हेन इट कम्स टू सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंस? यार ऑनेस्टली मैं अपनी पूरी लाइफ में ना जितनी बार मतलब आई हैव बीन एडिक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, including substances, people, porn, which I just said, but I've always still been focused towards my goals, whatever I've been trying to achieve. And one reason कि मैं कोई भी चीज़ try करता था, and the kind of person that I am, I'm a very extreme person. I'm a very impulsive person. So this is one thing that that is very common between people, those who get addicted very easily to things, that they are very impulsive. So most of the impulsive people, they are the most extreme people and they get addicted very easily. Yes. So my main agenda with getting addicted to something used to be either I wanted to fit in, or I was curious about seeing as to what exactly exists, जिसके बारे में इतना हवा बनाया जा रहा है. I always used to give my challenge before getting into anything that I didn't understand. Yeah, Abhinav, let's see what's the extreme and let's see. And just at the point wherever I felt, the thing, that risky wala feel, हर एक चीज़ में से बाहर आने की मुझे वही एक चीज़, because I've never been into any rehabs, never I had to talk to anyone. It has just been me who has got myself out of any kind of an addiction without even understanding what dopamine is or what happiness level is, whatever it is. My main agenda always has been, जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरा focus हिल गया है and the goals that I have set for myself, I have gone on a different kind of a tangent and it is harming me financially, physically, emotionally, mentally. कुछ भी इसमें से आ जाता था. I was like, this is risky now. Yes. This is like one thing I have always been aware about. Yes.
ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है, बिकॉज मोस्ट पीपल हु गेट एडिक्टेड थिंक दैट दे हैव दिस कैपेबिलिटी, बट समहाउ इन बिटवीन दे लूज इट. कभी ऐसी मोमेंट आई अभिनव आपकी लाइफ में जहां पे आपने ये सोचा कि कोई सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही लाइफ में, आपने कहा कि यार दिस सब्सटेंस कैन हेल्प मी और मे बी अल्कोहल कैन हेल्प? मेरे साथ उल्टा हुआ है. जब मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं होती, आई एम मोर फोकस्ड, आई वांट टू किल इट. लाइक यू नो, मेरी अच्छी, लेट्स से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं क्यों कोई सब्सटेंस ट्राई करूँ? आई हैव टू पे माय फ्रिकिंग रेंट. तो मैं तो ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा. आई विल शूट माय वीडियोस, आई विल मेक श्योर दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय क्लाइंट्स एंड स्टफ. मोस्ट ऑफ द एडिक्शंस दैट आई हैव हैड इन माय लाइफ हैव बीन एट अ टाइम, एंड दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स. ये तब होती हैं जब सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है. Yes. Everything is flowing, everything is going good, and then out of the blue you're like, I thought I was happy, but this seems to be something Better. which is giving me more happiness, and probably I'm missing out on something. ऐसा क्या है इसमें? So that has been my experience. What has your experience been? Literally very similar, because you know, first time when I tried alcohol, everything was very good in life. Everything was very good. I was like कि as my girlfriend says it कि यार तू हवा में उड़ने लग गया था ज़्यादा. तब मैंने अल्कोहल ट्राई करी तो मैं कहा यार exactly same चीज़ की यार, wow, this is so cool. So वही है कि but you know somehow my awareness levels have been very high, just like you, कि जब भी हुआ कि ज़्यादा होगी, ऐसा हुआ बहुत बार हुआ कि ज़्यादा होगी, बट उसके बाद अगले दिन उठ के खुद को बोला कि भाई not to be repeated. पर मेरे को काफ़ी लोगों के केसेस में मैंने ये देखा है कि रेगुलर यूजेज चल रही होती है, लाइफस्टाइल थोड़ा मेस्ड अप होता है, फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अननोइंगली ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे. और एक और देखो, सारे सब्सटेंसेस, इवन अल्कोहल, कुछ भी यूज़ करने का सबसे बड़ा इशू क्या है कि आज आपने कंज्यूम किया, आपका नेक्स्ट डे खराब होगा, नेक्स्ट 2 डेज खराब होंगे. सो बहुत बार क्या होता है, किसी की लाइफ में कुछ मेस्ड अप है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप मेस्ड अप है या वर्क मेस्ड अप है. गाइस में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि यार करियर नहीं बिल्ड हो रहा, एंड दे रिजॉर्ट टू अल्कोहल. अल्कोहल क्या कर रहा है? आपकी नेक्स्ट डे प्रोडक्टिविटी, मूड, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ट्रस्ट, सब कुछ एकदम नीचे ले जाता है. बिकॉज द रूल विद ऑल एडिक्शंस इज दैट यू नो वॉट एवर गोज हाई has to come down, right? And the come down is below the baseline. It's not अगर आप 1 से स्टार्ट होके 10 पे गए हो, वापस आप 1 पे नहीं आओगे, maybe 0.5. It's different for everybody. And it's worse for those जिनका लाइफस्टाइल मेस्ड अप है, स्लीप मेस्ड अप है, बॉडी इमेज इशूज हैं, वेट रिलेटेड इशूज हैं, वर्कआउट नहीं करते. मैंने पर्सनली ये देखा काफ़ी लोगों के केसेस में कि जिनका लाइफस्टाइल सॉर्टेड है, दे हैव अ करियर विच इज़ वर्किंग, दे आर एबल टू यू नो बाउंस बैक फ्रॉम मे बी फेजेस ऑफ हैविंग टू मच टू बीइंग नॉर्मल वेरी सून, राइट? अब एक और पॉइंट की बात करना चाहता हूँ. जैसे अब काफ़ी जगहों पे ये एजेंडास चल रहे हैं कि मैस्कुलिनिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फादर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट यहाँ से रीड करूँगा मैं. यूएस की स्टडी है. चिल्ड्रन विदाउट फादर्स आर ऑल्सो 10 times more likely to abuse chemical substances, and 71% of children who abuse substances come from fatherless homes. यूएस का स्टार्ट है. इंडिया में इन चीज़ों की ज़्यादा सर्विस या स्टडीज होती नहीं है. एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. एंड दोस सेम स्टडी वाले लोगों को जिनके father being at home was restored, 46% of them actually stopped using drugs, and 81% of them started indulging in stuff like sports, good things. So जिन families में obviously fathers नहीं हैं for any reason, being very cautious of such stuff. If there are single mothers, although India के single mothers होने के rate is just 4%, lowest in the world. Right, so that is a very good thing, but ये हमें we have to keep in mind that a masculine role would always help children in positive ways. Also, this is not just limited to alcohol or substance use. It is also limited to mental health issues. So fatherless children with single parents / fatherless homes face more mental health issues. They indulge in more violent crimes. So Abhinav, what do you think that why does this happen? It makes a lot of sense, man. It makes a lot of sense. Dekho yaar, as a kid, when you're growing up, your father figure is like a god figure to you. Yes. We always get inspired by our fathers. Yes, for the first 7 years of your life, your parents are your gods. Like whatever they 100%. Put in your mind, आपकी conditioning most of the life आपकी वैसी रहती है. And in the absence of a father, especially for men, it is very difficult to navigate life in an appropriate manner. Yes. Right. So I'm actually not surprised with the fact that you just told me most of these people who are getting addicted, they either didn't have fathers, but again, because
I have also worked with clients, those who had fathers, but they could not bring out that masculinity or that fatherhood, or probably they were addicted to their own levels. Very interesting point. Yeah, so they were not able to pass on that smartness or awareness to their children, right? And if I have to talk about myself, I would say from my teenage, मेरे अपने डैड के साथ रिलेशंस बहुत वियर्ड रहते थे. सो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ गाइडेंस फ्रॉम हिम बिकॉज आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू नेविगेट लाइफ थ्रू माई सेल्फ एंड I'm going to live like, because this was, when you are in that particular stage, you are very sensitive during those adolescence years. कहीं book में पढ़ लिया था, live as your father has died. I don't remember exactly. That was book. There's 7 Habits of Effective People or what. There was this one thing that etched into my mind. Like, if you really want to feel life, or you really want to feel the struggle of life, live or grow, live as if your father died. It sounds very negative. As far as I remember, I think as a similar dialogue hai by Carl Jung. He's one of the biggest fathers of psychology. Probably. His dialogue was something like this, that a man matures up when his father dies. It was not that. I am very sure it was something like, if you want to really grow in life, something like that live as if your father has died. It was just like that. So थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मेरे को, हिंदी में एक्सप्लेन करके दोगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप सही में, because earlier when there were empires, there were kings, and as I said, I always look at life in a very tribal way. Okay, so the kings, they had an initiation process. Okay, जो वो initiation process है उसमें they were 300 मूवी हम की बात करते हैं. So before that fighter, that warrior child was made a king, he had to go into a jungle, he had to stay alone, he had to fight the weather, he had to fight the extreme circumstances, he had to kill that wolf, bring back the wolf and cut the head, and then people accepted him as the king. Right. So I used to be amazed by all these theories. I think there was something about killing the dragon, like a warrior goes out of the home and then he slashes the dragon and then people accept him as their king. So I used to be very excited and very curious about these theories. So that was the point, that particular quote came in my journey, as live as if your father has died. Like, there's no one to take care of you. Now this makes sense to me. There's no one to take care of you. You are on your own. Navigate life through your own senses, through your own awareness. Do not ask for money. Do not ask for any resources. Do not cry in front of your parents if you really want to feel what the real struggle feels like. And I took it seriously. Okay, so what age did this struggle start? For me, this struggle started around 17 or 18. 17. That was the time when I was like, I have to get on my own. Right. I have to get on my own. I have to figure my own shit out. I have to get out of this environment and I have to grow. So that point of time, I started doing it. And so that was the point when I started looking at everything. कुछ भी होता था लाइफ में, गलत हो रहा है या गलत कंपनी आ गई है, कुछ भी आ गया है. So I'm talking to my parents. I won't tell them that this is happening. Even if I'm addicted to something, if I'm addicted to alcohol, anything that's happening in my life, I won't. I'll say, I will figure it out. I will figure it out. So that time I didn't take any advice from my father or my mother or my parents. I didn't stay in touch with them. And I saw like some of the biggest blunders that I've made in life have been the times when I've actually taken a decision of navigating everything through my own senses, through my own sense of awareness. And that is what eventually happens with a lot of people, those who don't have fathers, or they don't have those fatherly figures that have the ability to actually impart certain amount of wisdom or knowledge, or they are incapable of making them more aware about the life struggles or how to navigate the life. So when we go into life like that, we are more susceptible to trying new things, novel things, which gives us happiness. And there's a certain amount of pain and sadness for people जिनके dads नहीं होते हैं, या they don't have good relations with their dad. So somehow some kind of a pain has to be catered through some kind of an addiction. So that is why I think this is one thing that is definitely there, कि people, those who don't have fathers or fatherly figures, they are more susceptible to addictions. Yes, एक और रीज़न मेरे को लगता है ये, I like understanding personalities. So women में one thing is, women are devoted in nature. As partners, as even as mothers. अपने मैं केस में बताता हूँ, मैं अपने डैड को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, मॉम को बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है. It's not a good thing, but moms are devoted. They're devoted to their kid because they are in a way giving whole of their life, because from birth to taking care of children. तो बहुत बार क्या होता है कि
मॉम्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देना थोड़ा इजी होता है. And I think this is one of the reasons कि everyone, especially in our Indian homes, we are scared of our fathers. We are scared, and most of the times we are scared out of respect. Yes, respect, and sometimes you're also scared of reputation. Like it depends on home to home, like the kind of environment that you have been. Because when I was growing up, for me, the biggest pressure was that I had to excel in everything that I was taking part in. So for me, it was more of a risk of reputation, because वो पूरा मेरी फैमिली में चलता है कि ये lawyers हैं, ये doctors हैं, ये professors हैं. तो अगर तू third या fourth आएगा तो your reputation is going down. So that used to be a huge pressure on me. Yes. So I think वो depend करता है कि आप जिस फैमिली में रहते हो, कैसे उसके circumstances हैं, कैसा आपके ऊपर एक टारगेट किया गया है. लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, राइट, एंड एज अ फर्स्ट चाइल्ड, एंड दे आल्सो एग्री टू दिस डेट, दैट एज अ फर्स्ट चाइल्ड यू, एंड इफ यू आर अ गाय, यू आर अ काइंड ऑफ अ मिशन. Yes. You are kind of a mission that you come in. So that's it. Like that's about it. Definitely. काफी इस पे लोग memes वगैरह भी बनाते हैं that first child के साथ parents are at this level and second third child तक they are like they get very chill. Yes. And same pattern I've seen with although I'm the younger one, same pattern I've seen with my girlfriend's family. Right. That my girlfriend's like that my younger brother's girlfriend comes home. Right. I can't even tell my dad about you. Right. And our relationship has been so long. Now we can talk about it openly, Right. because now parents know. Yes, this is like in my case what was happening was that first 21 years of life literally fat lose करने के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं. एक दिन क्या हुआ, डैड से लड़ाई होती है, डैड कहते तो इतने सप्लीमेंट खा जाता है ये वो. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कुछ करने की जरूरत है मेरे को भी. बट फॉर मी दिस फेज केम वेरी लेट. बट वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि जैसे आपने मेंशन किया कि लिव लाइक योर फादर हैज डाइड is actually a great pointer, because for a lot of people, parents make our life easier. They do. And very easy life I love leads my to parents weak now. men, I love weak women. Yes. I love my parents now. Yes. Like I can see there's a lot of comfort in having a family, and I have come to that fact that no matter at whatever stage of your life you're in, your family, the kind of comfort and the kind of love that you can feel from them, it is not achieved by anything else. It can't be compared. Like that is one thing that has helped me to get out of any addiction in life. Like of course the goals and everything it's like when I see my family and the way that they support me during these times and the way that they have supported me during those times, I am like, yaar ye bande hai. Yes. And parents are actually wired for this. There is something called reproductive success. Yes. Their goals as humans, everyone's goal in a way, biologically speaking, not psychologically, biologically speaking, is to reproduce. That's why sexual activities feel so good. So that we indulge in reproduction. And for parents, one of the goals is to make sure that their child grows up safely and is successful. And so that journey keeps on happening. And that's great. The same thing जो plants में होती है. Like plants, when their main thing is to reproduce, so they found out different ways to how to pollinate their seeds and stuff. The same way as parents is, they have to reproduce and they have to make sure कि जो संस्कार और जो heritage पीछे से चलती आ रही है, our children are able to take this further. और वो automatically, naturally, it is somehow ingrained in us. Yes, but उसकी वजह से काफी लोगों को issues भी आते हैं, especially men. Because एक और भी चीज़ है, men are disagreeable in nature, right? नोटिस करोगे मेरी मॉम से बहुत रेयरली लड़ाई होती थी, डैड से थोड़ी ज़्यादा होती थी, बिकॉज डैड्स ऑल्सो डिसएग्रीएबल, आई एम ऑल्सो डिसएग्रीएबल, थोड़े इश्यूज आ जाते थे. बट नाउ इट्स वेल एंड गुड. एंड इन माई करियर वन थिंग, जैसे एडवाइस वाली बात करूँ तो बिजनेस में सम ऑफ द एडवाइसेस डैड हैज़ गिवन टू मी विच अगर मैं नहीं अप्लाई करता तो बिजनेस वुड हैव बीन wouldn't have been this good. Brilliant. Right? But उस टाइम जब वो एडवाइस दे रहे होते थे मेरे को लगता था क्या बोली जा रहे हैं यार, he's from a different generation, but I still applied them. And now if I look back, now after getting mature, if I look back, I'm like, wow, brilliant. So Abhinav, how in your definition right now, not old Abhinav, अभी की definition के हिसाब से, how would you define the difference between use and overuse? आप किस चीज को overuse बोलोगे, किस चीज को use बोलोगे? Again, let's take a reference thing or a reference point to make a differentiation in between both. For example, let's say I am talking about a cheat meal. Okay, I take it as a weapon in my arsenal. Same thing like anything else that has the potential of getting you addicted. Let's say I talk about a cheat meal. When I say using a cheat meal, I'm like, I'm going to focus the first 6 days on
working hard, making sure that I'm working out, I'm doing my diet right, I'm taking proper nutrition, my supplements and stuff like that, so that on the 7th day I can use the cheat meal just to take a break or just to chill from my monotonous life. The same thing goes with alcohol, the same thing goes with marijuana, the same thing goes with anything else that we talk. Abuse is when जब हमारा एक पर्टिकुलर फोकस खत्म हो जाता है, हमारा जो उस पर्टिकुलर चीज़, सब्सटेंस या सिचुएशन को यूज़ करने के पीछे एक गोल है, वो उसकी वैल्यू नहीं रहती है. एंड देन वी गो इन अ काइंड ऑफ हैबिचुअल यूजिंग इट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे वो हमारी डेली रूटीन या हमारे गोल्स या हमारी लाइफ इसमें एक नेगेटिव इफेक्ट लाने लग जाता है. दैट इज़ व्हाट वी से अब्यूज़. सो ब्रो, काफ़ी लोग हैं, जैसे आपने कहा वंस इन अ वीक, मेरी भी एक्चुअली अल्कोहल इट्स लाइक डेफिनेशन वंस इन अ वीक, दैट्स इट. वो भी कई बार मैं स्किप करने की कोशिश करता हूँ. लास्ट वीक स्किप किया बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड महाशिवरात्रि. फास्ट कर रहा था सैटरडे को. जनरली मैं सैटरडेज आर लाइक दिस एंड जनरली संडे खराब हो जाता है. तो कुछ लोगों का रूटीन बना रखा है कुछ लोगों ने कि यार इवनिंग में हमने कुछ ना कुछ तो करना ही करना. Right. डू यू थिंक दैट्स यूज और अब्यूज? It all depends how it's affecting your life, man. Let's say, just take an example of alcohol because I think that is one of the most common things that we know about addiction. This substance is more used in that particular word. See how you feel or how your life is going after doing that particular thing. See your health markers. Okay, it's fine. Like, let's say you are the fittest person in the world and you're having one glass of wine every single night, every single evening, and your blood markers are fine, your career is fine, your relationship with your friends, your family, everything is going fine. No problem, right? At the end of the day, you have to see how it's affecting your life. If it has a negative effect in somehow, if you are feeling कि आपकी health के ऊपर खराब हो रहा है, let's say you are getting fatter, okay, you are munching too much of food after consuming that alcohol, your impulsive behavior, you're getting more aggressive after using it, you're lashing out on people, your productivity is going low the next day, you're feeling groggy the next morning, that means you need to chuck that out thing, that right. thing out of your life. Right. But जैसे आपने बोला बहुत एकदम वैलिड चीज़ है, बट सबसे बड़ा जैसे आपने बिगेस्ट पॉइंटर फ्रॉम व्हाट यू सेड वाज कि it should be tracked, right? Right. It has Tracking to be comes from awareness. Yes. Jise, we are in the fitness industry. We would always, get our blood work sorted. We'll, I like tracking my sleep. Right. Sleep tracking big second में आता हो तो अगर, but what I've personally seen is 80% of the people who are indulging into daily stuff, they don't get their blood work done. उन्हें डर लगता है खुद ही, उस चक्कर में वो अवॉइड करी जाते हैं. अवेयरनेस ओवरऑल कम है कि मतलब लाइफ क्वालिटी लो हो रही है, बट उन्हें लगता है दैट इज नॉर्मल. एक चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है, व्हाट इज कॉमन इज नॉट नॉर्मल, राइट? For example, a lot of people think that, if we wake up cranky, that's a normal thing. Because that has been happening since months and years. Right. But that's not normal. Right. You should be waking up with a good mood and, with a mission. Right? If that is not happening, तो वो awareness issue है. बहुत बार सोचते हैं लोग कि यार normally ये मेरे nature का part है, ये मेरी life का part बन गया. तो मुझे personally लगता है कि काफी टाइम से जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से लोगों की लाइफ क्वालिटी कम हो गई है एंड उनको लगता है दैट इज कॉमन, बाकियों की भी क्वालिटी कम है लाइफ की एंड दैट इज नॉर्मल. उठते ही गुस्से में उठ रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. True that. राइट. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये मैंने एक्चुअली खुद ट्रैक करके सीखी है. इवन 1 ग्लास ऑफ वाइन जिसमें हैंगओवर बिल्कुल भी नहीं फील होता, ट्रैकिंग वाले स्टैट्स तो ये शो कर रहे होते हैं कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी. बॉडी टेम्परेचर ऊपर रहता है बिकॉज अल्कोहल इज थर्मोजेनिक इन नेचर, तो उसकी वजह से डीप स्लीप, रेम स्लीप सब कुछ मेस्ड अप होता है. तो बहुत बार होता है, पहले मेरे को भी ये लगता था कि यार एक ग्लास से क्या होता है, जब तक मेरे को पूरा फील नहीं हो रहा हैंगओवर, मेरे को लगता था हैंगओवर एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट जब से ट्रैक करना स्टार्ट किया, दैट हैज हेल्प्ड. यस, ब्लड वर्क कराओ एवरी नाउ एंड देन, लिवर मार्कर्स चेक करो अपने. एक और चीज होता है अल्कोहल वगैरह से, अल्कोहल एंड इवन स्टफ लाइक मैरिजुआना, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इससे स्लीप बेटर हो रही है. It is just making you sleep, but उससे sleep better नहीं हो रही, sleep quality goes down, right? इस पे sleep पे we'll do an episode someday, very soon. तो तब डिटेल में बात करेंगे. But it is messing up your sleep. Start tracking properly, yes. and that's when you'll understand. In my opinion, अगर कुछ डेली आप यूज कर रहे हो तो चांसेस आर कि डेली यूज के साथ आपका रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल इज ऑल्सो मेस्ड अप. जैसे अभिनव ने मेंशन किया कि you are the fittest man on earth. Chances are 90% of the chances are fittest man on earth would not have wine every night, right? And those who are having wine every night might not be very fit, right? So wo bhi look into that, because generally jo people who are fit are automatically become very conscious about stuff. Yes, eventually, see, at the end of the day, it's a beautiful point that Yash just covered right now ki you have to track. Like, of course,
देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ पीपल कि हाँ हम इस चीज़ को, चाहे सुट्टा है चाहे दारू है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो कब पता लग सकता है कि ये नुकसान करेगी कि नहीं करेगी? द बेस्ट वे इज़ टू ट्रैक इट. Yes. Initially your main thing is to track it so that you understand how it is affecting your body, but at the end of the day you have to become more aware. Like our end game goal is to be so aware with our own bodies, and of course it comes with certain amount of tracking कि हमें जैसे ही उस चीज़ को हम ingest करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, हमारी बॉडी खुद सिम्टम्स दिखाना शुरू करती है, एंड वी बिकम मोर अवेयर, हमें पता लग जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ माई नाइट, लाइक आई वॉज I won't say eating the wrong foods, but I was my eating habits were not changing, although my lifestyle was becoming more stressful. And I was wondering why I'm waking up in the middle of the night to pee, right, which is disturbing my sleep. And then I came across something known as CGM, known as continuous glucose monitoring. Yes. And then I started tracking. What was eventually happening is कि I realized I was giving a lot of advice to my clients, but I was missing out on this कि जब आप stressed होते हो, जब आपकी लाइफ में stressful events होते हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी ख़राब हो जाती है, आपकी स्लीप थोड़ी वेवर्ड होती है, एंड यू आर नॉट एबल टू sleep properly, and whatever carbs you are consuming, whatever sugars you are consuming, they are not being utilized in your body in a proper manner. So that CGM helped me to track which are the problematic foods for me. क्या मील्स कॉम्बिनेशन से मेरा शुगर स्पाइक हो रहा है, रात को क्या खाना खाने से मुझे वो दिक्कत आ रही है, स्पाइक हो रहा है, रात को मुझे मिडल ऑफ द नाइट उठ के आई हैव टू यूज़ द वॉशरूम. एंड 15 days in, I tracked properly. I became aware as to what all foods. Again, we are in the fitness industry, so we are like completely into it. ये खाना अच्छा नहीं है, इसको बाहर करो. ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको बाहर कर, निकाल इसको. And then I became, but for someone, they might not be able to do or bring about that awareness in 15 days. They might have to track it for a longer period of time to really understand that thing. So if you are including something which you're not sure about in your routine or life, have a way to track it for at least, I would say, a month, just to have an understanding of how things are going with it. Yes. Another thing is that, it's lack of awareness starts from, for a lot of people, lying to self. Right. आपको बड़ी funny story सुनाता हूँ. There's this very good friend of mine. So he smokes every now and then. So he was like कि एक दिन आके कहता कि bro मेरे को ना सिगरेट की कोई craving ही नहीं होती. मैं कहा बहुत सही. फिर मैंने उससे पूछा कि bro लास्ट सिगरेट कब पी थी? कहता 2 घंटे पहले. तो मैं कहा ब्रो हाउ डू यू नो? मैं कहा कब हुए हैं कि 3 to 4 days हुए हैं जब तूने नहीं पी? कहता यार वैसे बात तो सही है, जब मुझे क्रेविंग होती है तब मैं पी लेता हूँ. वो बोलते हैं ना, वो झूठ, दूसरों को झूठ बोलते बोलते इंसान खुद से ही झूठ बोलना लग जाता है. लिटरली. तो जब उसने कहा कि, तब मैंने सोचा कि बहुत बार हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं और उस डायरेक्शन में अपने माइंड को ही नहीं लेके जाते कि हेल्थ वाला है, इग्नोर कर ही जाएंगे उसको टिल द टाइम द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी बिग. राइट. सो अभिनव एक चीज़ बताओ कि अब I'm pretty sure a lot of people who are watching this might be becoming aware of this now. How do you improve now? What do you think should be the first step when someone has to improve? उन्हें लग रहा है कि यार एडिक्शन वाली किसी स्टेज पे इम्प्रूवमेंट का स्टेप नंबर 1 है. स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा guys, if you are at a stage where things are very messed up, seek medical help. Right, YouTube videos won't help you, podcast won't help you. If you are stuck in a bad situation, this can be a starting point, but seek medical help, because a lot of times these things can improve, and that does not make you less of a man in any way, and that's what. So आप बताओ, अगर किसी ने करना है कि चलो मे बी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको अब लग रहा है कि यार कम करना है, कैसे? I think the second point is something that you've already mentioned. The first point needs to be acceptance. Yes. You need to accept that you have to understand that it's a problem. You are going to destroy yourself like this. Like, you have to understand that and accept that. Once you accept that, as Yash said, if you see yourself not being able to get out of that pattern, even when you've tried multiple times and you see you going back into same kind of habits and same patterns which are sabotaging your life, the experience of life, the experience of your relationships, seek help. The simplest thing, just seek help. Talk. Expressing, seeking help, you will at least start your journey. At the end of the day, it is all about starting the journey towards improvement. It won't happen overnight. You might feel miserable before you feel better, but seek help. Whatever it is, you think a friend can help you, go and talk, have a word. You think your family can help you, have a word, go talk. If you think a professional can help you, बीमार होते हो, बीमारी तब तक हम खुद एक पिल खा के ठीक कर सकते हैं जब हमें पता है कि हमें बुखार है, हमें पता है क्रोसिन से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी. लेट्स से कोई बड़ी बीमारी हो गई, आप नहीं ठीक कर पा रहे हो खुद से,
क्या करोगे? आप वेट करोगे कि कब वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. Immediately when you realize कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, go and seek out for help. You need to find someone to at least talk to. Yes, step number 1 is understanding that it's a problem. इस चीज को इग्नोर मत करो. कोई भी चीज आप बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हो, be it porn, be it any substance, be it any activity, right? Which is not adding up to your life and which is causing issues for you, that is a problem. Second, understand that it is not a solution to any problem. Right. There's this very famous quote that show me a man with an addiction and I'll show you a man with unresolved trauma. Guys are not good at sharing their emotions. Right, and guys go through a lot and somehow guys are kind of underrepresented. Right, guys can't cry. Guys, मैंने एक और पैटर्न देखा है, खुद में भी देखा कि कोई इमोशनल सी बात होती है, मैं जनरली आई डोंट शेयर इट विद माय गाय फ्रेंड्स. Right, so understand that it's not a solution to any other problem. Right, कुछ भी आपको mental health related issues face हो रहे हैं, physical health related issues, confidence related issues, career related issues. Making money is a big thing because guys are supposed to be protectors and providers. वो issues sort नहीं होंगे, वो सारे issues worsen होंगे from mental health. And ये चीज़ें तो scientifically proven है, everyone knows that. Right, from how you feel to your career, productivity levels and everything else. Same thing is that what is the experience of your day, man? Yes. What is the experience of your life right now? Like, कैसा लग रहा है तुम्हें? Yes. अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है जो तुम्हें पकड़नी जरूरी है. एंड वो गड़बड़ तुम्हें पता है. You know. Yes. You already know it. Yes. What is it? You are just going in the circles. You are trying to point out things that this which one, are easier. Yes. But which are not right. Yes. Because it's easy to blame on that thing because इसमें एफर्ट ज्यादा है. इससे छुटकारा पाने में से एफर्ट ज्यादा है, इसलिए आप झूठ बोलोगे कि नहीं ये बंदे की वजह से हो रहा है या मेरी सिचुएशन की वजह से, इसकी वजह से. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो whatever fuck ups we have done in our life सब हमारी वजह से है. And even अगर हमारी वजह से नहीं है, we are responsible for it 100%. Because that's your life and only you can fix it. So step number, again, take ownership. That's that's a great pointer because it's very easy to point finger at others and very difficult to wake up and look into the mirror and asking yourself that how can I take charge, how can I improve. बहुत सही pointer है. Next है कि एक आदत है ट्रिगर्स रिमूव करना. मेरे को पर्सनली लगता है कि ट्रिगर रिमूव कर दो. जैसे पॉर्न इज वन ट्रिगर, राइट? इफ पॉर्न इज एन इशू फॉर यू, when do you watch porn? At night? Right. Maybe start sleeping early. Maybe don't keep your laptop in a room. That it becomes impossible for you. And I think again it starts with understanding it's a problem and removing triggers and finding problems in life is very simple. Life is simple, simplicity is not, right? In the end सारे आंसर, जैसे Abhinav just mentioned कि सारे आंसर्स हमें अंदर से पता होते हैं बट हम उस आंसर पे कभी नहीं जाते. तो जनरली मेरा पर्सनल रूल क्या है, कुछ भी चीज़ मेस्ड अप चल रही है, मैं सबसे सिंपल आंसर ढूंढता हूँ उसका. सबसे सिंपल आंसर ही सही आंसर होता है एक्चुअली, कि किस चीज़ पे वर्क करना है, सिंपलेस्ट चीज़. एंड वो जनरली हार्डेस्ट भी होता है आपके लिए. जो भी हार्डेस्ट सोल्यूशन लग रहा है उस पर वर्क करो. उसके अलावा जैसे अभिनव ने मेंशन किया कि लुक एट हु यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद, लुक एट योर टॉप 5. इसके बारे में आप बताओगे अभिनव कि सबको पता है कि यार अपना सर्कल अच्छा होना चाहिए. वी आर अ रिफ्लेक्शन. आई थिंक आई स्टार्टेड द वीडियो विद द सेम थिंग, लाइक फिट इन वाली जो मैंने चीज बोली थी. इट इज, you have no idea how much it affects you, the kind of people that you are with. I mean, everyone is like my clients sometimes these young people on my social media, they ask me, भैया हमारे दोस्त नहीं है. Right? हमारे दोस्त होते थे बट वो दारू पीते थे, वो सुट्टा मारते थे और मैं उनमें नहीं रहना चाहता, मेरे पास दोस्त नहीं है. I'm like, it's okay, it's better to be alone, man. Yes, than being with the wrong people who are messing up your life. Don't be lonely. Yes. Have your solitude, be alone and work up, increase your potential, work up to a place where you can attract your kind of people, the kind of people that you deserve. जो तुम्हारे पहले दोस्त थे वो भी तो तुमने अट्रैक्ट किए थे ना, because you were seeking for them. At some level you were seeking for them, and now you want to seek for more productive people. Yes. Better people, mentally stronger people, focused people, powerful people. Yes. So be that, na. Definitely. And अगर आपके top 5 are they are themselves stuck, right? They're not bad people. They are also the triggers. Yes, they are the triggers for sure. They are bad for you, but understand that they are not bad people. They are themselves going through stuff. They are themselves unaware, right? तो ये मत सोचो कि जो आपके current friends है गलत ही इंसान है. ऐसा नहीं है. Everyone is on an improvement, a journey of improvement. So ये understand करो. And again, your people
would dictate it. And एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ देखी है. जब हम उनके साथ होते हैं ऑब्वियसली हमें अच्छा फील हो रहा होता है, बट हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम रियलाइज नहीं कर पाते कि यार गलत है ये. राइट. इफ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस यू डोंट अंडरस्टैंड यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस. राइट. लगता है यार मेरे को कुछ नहीं है, आई एम वेरी मेंटली स्ट्रांग, बट this is like, this works for every human being. Yes. Surround yourself with 5 legends, you would be the 6th one. Yes, and if you don't have, just become a legend so that yes, they can find you or you can find them. Definitely. And this is a great pointer that if you want to, guys को generally use करता that if you want to attract the princess, become the prince. But again, if you want to become a legend, and you will attract legends. On the other spectrum, if you surround yourself with 5 idiots. And most of the times, one thing I always also realize, most of the times what will happen is, if you were in a group, let's say, who were in a particular addiction and you were stuck up with them and you come out, you will see them getting inspired from you. So you're getting out of that particular phase and you're growing, you're moving out, you're becoming more productive, you're becoming more powerful. It will help them to look up to you. Okay, some might not be able to look into that perspective, but some of them who are stuck in that particular pattern, because they also want to get out of it. Yes. They just don't know it. Deep inside, everyone wants to. They just don't know it. They just don't know how to accept it and work towards it. But by watching you grow, you will be able to inspire them to get out of that. डेफिनेटली. एंड ये चीज़ रियलाइज करो कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी, सारी चीज़ें मैसअप हो रही हैं इन चीज़ों की वजह से. एंड सो अभिनव, डू यू थिंक दैट मॉडरेशन वर्क्स, मॉडरेशन एग्जिस्ट करती है, या देयर आर सम पीपल हु आर लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना? एंड व्हाट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज और व्हाट फेज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन you are. Like if you are deep, yes, if it is an addiction, then moderation does not exist. How can moderation work? If we Great take common sense, how can moderation work? There is no way the moderation can work, because you're addicted, you're trying to still hold on to it. Yes. On the other hand, you're trying to get out of it. It's like you're trying to put the foot on the accelerator, and on the other hand, you're trying to put the foot on your brake. So आप सोच के देखो क्या हाल हो रहा है आपका. Okay, moderation में ना आप इधर के हो ना आप उधर के हो. Yes. So moderation की बात हम तब करें when you're not addicted, और जब आप किसी चीज की लत नहीं लगी है आपको. राइट. प्रॉब्ली उस केस में मॉडरेशन क्या वो क्या once a week drinking might be fine for you. Once a week cheat meal might be fine for you if someone is on fat loss, because both are from fitness. If someone says sir cheat meal का क्या करें, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, बिकॉज तुम अभी 1 साल चीट मील लेते ही आए हो. अभी मैं तुम्हें नहीं दूंगा. अभी तुमने उसका बैलेंस बनाना है. 1 साल कोई चीट मील नहीं. You are addicted to something for 1 year, stay out of it. Show yourself that you are not addicted to it anymore and you don't need it to feel happy in your life. Then we talk about moderation. This is great. जैसे अभिनव ने just mention किया कि it depends upon the personality. Yes. That's number one. Also it depends upon your current life situation. चीजें messed up है, career messed up है, relationship messed up है, छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो. Maybe long term get back on it. But again, if you are someone who's very balanced. एंड एक और चीज़ बताता हूँ, सबको मन में लगता है कि हम बहुत बैलेंस्ड हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं. इन चीज़ों में वी आर नॉट. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बार मेरे को लगता था यार अल्कोहल, I used to think those who are ever having too much of alcohol or mixing it and puking are idiots. एक आधी बार मेरे खुद के साथ हो गया, तो I was like, अब क्या हुआ? That's when I told myself that you were thinking others are idiot, but you are the biggest idiot. I think it's about this. Yes. We'd say we are the smart people, we are smart. Yes. It's this. It's your mind. You need to always recheck. Definitely. Is your mind really smart? Are the things that you're doing making sense? Is that something you would want your own children to do? Yes. If the answer is no, there you catch yourself. Definitely. It's a great pointer that you would want your children or your best friend to do. Yeah. So Abhinav, if someone wants to make a plan to stop it, right? What would you recommend? See, अच्छे प्लान खराब हो जाते हैं अगर आपकी इंटेंशन सही ना हो एंड आपकी जो मेन गोल है वो सही ना हो. फर्स्टली यू हैव टू acceptance is the first thing. Yes. Right? And then you are like, why do I want to get a work out of it? What is it preventing me to achieve in life? Yes. Is it destroying a certain relationship in my life, which I really want, because I know that this temporary feeling is nothing and I want this permanent feeling, this person in my life, even though my dopamine high is a little low, and I might go into some clash with that person, right? And or is it affecting my career
for example, look at your finances. How were your finances before you got into that addiction, and now you are like half x of where you used to be, and you are in this particular stress when you should not be, when you should be growing in your career. क्या वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? देखो, वो गोल बनाओ. Every goal. As fitness coaches, what do we say our clients? What is your why? Yes. Why are you doing it? Definitely. Why are you doing it? Tell us. Tell yourself why are you doing it? उससे आपका फोकस इस चीज से उस चीज पे जाना शुरू होगा. Every morning you get up, you are focused on this. Every time you get the वो तलब बोलते हैं ना उसकी इस चीज की. Yes. You have something to focus on. Yes. Okay. So that is the first thing that you need to do. You need to find your why. You need to find a proper goal जिसपे आप फोकस करके इस चीज से फोकस हटाना शुरू कर सकते हो. That is the starting point. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जैसे फोकस के लिए यू शुड हैव सम मिशन इन योर लाइफ, बिकॉज फॉर मोस्ट मेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम निहिलिज्म. निहिलिज्म इज बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो. कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास कैसे करोगे? इन सारी चीजों से टाइम पास मच बेटर होता है. और टाइम पास करने के लिए आपको ऐसे फ्रेंड्स काफी मिल जाएंगे, बट अगेन दैट इज मेसिंग अप योर करियर. यस, आपका टाइम जल्दी निकल रहा है ये चीजें कंज्यूम करके, बट यू नो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे हमने डिस्कस किया, ट्रिगर्स हटा दो सारे. Be it people, be it situation, and you know, just don't get example देता हूँ. अल्कोहल छोड़ना चाहते हो, stop going for parties. True that. Right? Smoking, आप आपके सारे फ्रेंड्स स्मोक अप करते हैं, स्मोक करते हैं. Stop hanging out with them temporarily. Easy. Again, doesn't make them a bad person. No. Easy. Again, life is simple, things are easy, but you know, applying them becomes difficult. Next is create accountability. Right. Tell someone who you look up to. Right. एक तो accountability खुद के साथ तो create करो ही करो, because in the end आपकी life है, आपकी life ही improve होगी, या अभी खराब हो रही है तो आपकी life ही खराब हो रही है. But accountability create करो with someone who you trust. Right. Be it your coach, be it your mentor, be it someone in your family, अगर family वाला है तो, be it someone in your friends who does not do these things, and you know that person can support you. Also एक और चीज़ मैं mention करूँगा कि taper down slowly. ये स्पेशली मैंने स्मोकिंग के चक्कर में देखा है. अब बहुत बार होता है, देखो 100 में से एक केस ऐसा होता है जो छोड़ना चाहते हैं. आज उन्होंने कहा कि छोड़ देंगे, और वो छोड़ भी देते हैं असली में. हम इन दी एंड जो भी स्मोकर्स स्मोकिंग का एग्जांपल देता हूँ, जो भी स्मोकर्स छोड़ना चाहते हैं वो एंड में रोल मॉडल उस बंदे को देखते हैं कि भाई ये कल 10 पीता था सिगरेट्स, आज इसने छोड़ दिया, अब इसको 6 महीने हो गए छोड़े हुए. बट दिस डज नॉट अप्लाई फॉर एवरीबडी. ट्रू दैट. राइट. टेपर डाउन स्लोली. सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मे बी यू आर हैविंग 10 सिगरेट्स इन अ डे, गेट दिस डाउन टू 8. 8 का मतलब ये नहीं आपने 8 पीनी है, ये गोल बना लो कि भाई मैक्सिमम में 8 पीनी है मैंने. फिर ओवर टाइम गेट इट टू 6. फिर धीरे धीरे करो, दैट्स मच बेटर, बिकॉज उसमें आपकी कोई लाइफ भी ज्यादा नहीं हिलेगी. सेम गोज फॉर अल्कोहल. यू आर हैविंग इट 3 times इन अ वीक, मेक इट 2 times इन अ वीक, देन लिमिटेड टू जस्ट वीकेंड्स, देन मे बी लिमिटेड टू जस्ट ओकेजन्स. राइट. अगर आप ऐसे एक्सट्रीम सोच रहे हो कि यार आज उठे आप मोटिवेटेड हो, गैस एक और भी चीज़ अंडरस्टैंड करो कि मोटिवेशन पे जिंदगी नहीं चलती. मोटिवेशन टेम्परेरी है. आज आप मोटिवेट हो, यस मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड, बट ओनली डिसिप्लिन एंड मेकिंग अ हैबिट आउट ऑफ इट वुड हेल्प यू कंटिन्यू. राइट. सो अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो, आज ये ना सोचो कि यार मैं 5 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, आज बंद कर दूंगा. बेटर सोल्यूशन वुड बी टेपर डाउन करो स्लोली, हर वीक गोल करो सेट. अकाउंटेबिलिटी किसी के साथ क्रिएट कर सकते हो तो करो. एक और भी चीज़ बताता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सिस्टेंस वायलेशन. इसमें क्या होता है कि आपने प्लान किया कि यार बिल्कुल भी नहीं करना, आपने 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपने नहीं किया. उसके बाद आप एक सिगरेट भी पी लेते हो तो आपके माइंड में आता है फक इट, एंड यू गेट बैक टू योर ओल्डर वर्जन, एंड यू नो इवन मे बी वर्स इन सम सिचुएशंस. सो ये ना सोचो कि यार अगर जैसे आपने आज प्लान किया कि यार मैंने नहीं करनी स्मोक, और कर भी ली गलती से एक स्मोक, इट्स फाइन. टुमारो वुड बी अ न्यू डे. Today would also be a new moment, right? It's a simple thing that we say to our clients, like, look for progression, not perfection. Yes, 100%. It's a simple thing. Like, look for progression, not perfection. Yes, one in 100 people can be perfect. Yes. But chances are that, you know, you are from the other 99. So taper down slowly. Yes. You know, I've personally helped a lot of my clients leave smoking, leave these things. And this tapering down and creating accountability around that, plus allowing yourself to be human, that means allowing yourself to make mistakes, changes the game. Yes. Something that everyone can take from this is कि everyone has a different journey. When we talk about getting rid of any kind of an addiction, सबकी different journey रहेगी. Don't think that you don't set a time frame for yourself कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में. Always look, are you progressing? Yes. And the best symptom or the sign that you know that you're progressing is when you use that substance or you do that thing, there is a feeling of guilt Yes. in you. That is the biggest sign. When you start getting guilt, don't feel bad for yourself. Yes. No, now your mind is waking up. Yes. Now your conscience is Yes, waking guilt up. is a great Yes. feeling. Yes, people run from guilt. जिस तरह आप अपने छोटे एक
10 साल के 7 साल के वर्जन को ट्रीट करना चाहोगे, खुद को वैसे ही ट्रीट कीजिए, राइट? जस्ट बी जेंटल टू योरसेल्फ समटाइम्स, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर and how lucky you are to have that kind of a conscious and awareness as a human being जो animals के पास नहीं है. Definitely. Right? So when you feel that human aspect of not being perfect, be happy with it. Yes. Because now you're on the right track. Yes, humans have the capability to imagine and improve. Yes. Right? So, thanks to our brain. And such a powerful episode. And guys, this week we are working on removing one addiction from our life, which is not helping us in any way. It can be small stuff also. It can be, scrolling on Instagram also. Although, if you like scrolling on Instagram, scroll on our page. And for that, guys, join a community with like-minded individuals. Me and Abhinav, both of us are very active in the community. Our goal is to, remove one addiction, at least start with the journey of reducing it, and join the free Telegram group, and see you there, and see guys, you next week. All the links will be given in the description. We are grateful for you to watch this podcast, and please comment section में जाके बताइएगा how did you find it, any recommendations you have, and we're going to see you soon in the next video. Till then, take care. Bye guys.